अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उज़मा अकरम है और मैं एज अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी पे कराची में काम करती हूँ, जो कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट बर्थ की एक ब्रांच है। और आज आपसे थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बातचीत हो रही है, जो कि एंडोमेट्रियोसिस और इनफर्टिलिटी के हवाले से है, क्योंकि ये इस तरह का एक टॉपिक है जिसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च भी हो रही है और कंटिन्यूसली एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड नई चीज़ें हर वक्त आती रहती हैं, और जिसके लिहाज से बहुत सारे से लोगों के पास बहुत से सवालात होते हैं एंड दे आर कंसर्न्ड के व्हाट इट इज़। एंड आई होप कि मैं थोड़ी सी ब्रीफ आपको एंडोमेट्रियोसिस के बारे में जो डिस्कशन होगी उससे आपको कुछ फ़ायदा हो जाएगा, जो लोग भी इस वक्त हमें फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं। तो थोड़ा सा तो एंडोमेट्रियोसिस का इंट्रोडक्शन लिए। एंडोमेट्रियोसिस जो है बेसिकली एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, विच इज actually the presence of endometrium, which is the lining of uterus outside the uterus. Therefore endometriosis जो है वो outside the uterus lining चली गई है, therefore the growth is estrogen dependent, and whenever a female patient or a person has menstruation, she can have that growth outside the uterus as well. इसीलिए estrogen dependent होने की वजह से ये मोस्टली जो है विमेन जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की और यंग गर्ल्स होती हैं, उनमें एंडोमेट्रियोसिस ज़्यादा होता है। अब एंडोमेट्रियोसिस के कॉजेज़ बहुत से हैं, बहुत सी थ्योरीज हैं, और अभी भी इन पे काम हो रहा है। एग्जैक्ट कॉज अभी भी नहीं पता कि एंडोमेट्रियोसिस क्यों डेवलप हो जाता है, लेकिन इसकी प्रेवलेंस जो है जितनी फीमेल्स में है वो भी इतनी एग्जैक्ट उसका भी अभी तक नहीं मालूम। अबाउट 2 to 10% ऑफ फीमेल पॉपुलेशन they do have endometriosis, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 2 to 10% में से 50% endometriotic women they will be infertile, they have issues with fertility। और सिम्टम्स जो है उनके बारे में भी हमें ज़्यादा नहीं अभी तक अवेलेबल डाटा जितना भी है कि किस तरह के सिम्टम्स के साथ एंडोमेट्रियोसिस में कॉमन सिम्टम्स जिनसे पेशेंट्स प्रेजेंट कर सकते हैं वो आते हैं हमारे पास। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ वो यही है एंडोमेट्रियोसिस के बीच में कि एंडोमेट्रियोटिक रिलेटेड पेन and infertility. These are the two important symptoms in endometriosis. Pain can be very deep-seated pain, pelvic area में, lower abdomen में, and this pain can be at the time of intercourse in the form of dyspareunia हमारे पास आ सकता है, लेकिन it is before the start of menstruation, during menstruation, after menstruation, and this is a very deep-seated pain. Patients हमारे जो आएंगी वो इस तरह से कंप्लेन कर रही होती हैं, या ये कि जो फील करते हैं लोग, it is not superficial, it is high up in vaginal area से pelvic area में high up इसका pain feel होता है। So these are the two common symptoms which can happen in a woman with endometriosis. इसलिए जब कोई फीमेल पेशेंट आती हैं किसी भी डॉक्टर के पास और वो लोअर एब्डोमिनल पेन और पेल्विक एरिया के पेन की कंप्लेन कर रही हैं विच इज़ गोइंग ऑन फॉर मैनी ईयर्स, तो इट शुड नॉट बी इग्नोर्ड एंड शी शुड बी एग्जामिन्ड। उनकी हिस्ट्री भी प्रॉपर लेने की ज़रूरत होती है और एग्जामिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन के बीच में pelvic examination is important because sometime in a thorough pelvic examination vaginal spots of endometriosis they can be found. लेकिन diagnosis after examination अभी कुछ अर्से पहले तक तो इट वॉज रेकमेंडेड कि बहुत से बायोमार्कर्स भी किए जाते थे और लेप्रोस्कोपी गोल्ड स्टैंडर्ड समझी जाती थी, बट द न्यूएस्ट रिकमेंडेशंस और गाइडलाइंस जो कि डिफरेंट फर्टिलिटी सोसाइटीज़ की तरफ से अब आ गई हैं वो यही हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो इमेजिंग टेक्नोलॉजी है। इफ़ अ पेशेंट कम्स विद द सिम्टम्स ऑफ एंडोमेट्रियोसिस तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उनका एक अच्छे सोनोलॉजिस्ट से अल्ट्रासाउंड करवाया जाए और एमआरआई करवाया जाए, एंड इफ स्टिल देयर इज़ नो फाइंडिंग ऑफ एंडोमेट्रियोसिस एंड इवन विद द ट्रीटमेंट पेशेंट का पेन या कंप्लेन रिलीव नहीं होती, देन वी शुड गो फॉर लैप्रोस्कोपी फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। But it is now easier, instead of going for an invasive procedure for laparoscopy, we can diagnose endometriosis, and it is a new gold standard to go for imaging like ultrasound and MRI for endometriosis diagnosis के लिए. So once it is diagnosed, then it can be staged.
depending on the extent to which the disease has spread. इसलिए इम्पॉर्टेंट सब लोगों के लिए ये चीज़ है कि जो भी पेशेंट्स इस तरह के पेन के साथ आते हैं या इनिशियली सस्पेक्ट किया जाता है कि एंडोमेट्रियोसिस, then they should be guided to see a specialist जो कि ट्रेंड हो गुड इमेजिंग के लिए भी, लेप्रोस्कोपी के लिए भी, और डायग्नोस प्रॉपरली कर सकें, क्योंकि स्टेजिंग के ऊपर डिजीज़ का ट्रीटमेंट की ऑप्शंस जो अवेलेबल होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। इसलिए अगर माइल्ड टू मॉडरेट, जिसको स्टेज 1 या स्टेज 2 डिजीज़ कहते हैं, विच हैज़ अ स्पेशल ग्रेडिंग सिस्टम, इसकी नंबरिंग होती है कि 1 to 6 पॉइंट्स हमने दिए हैं तो ये माइल्ड है, इससे ज़्यादा है तो मॉडरेट है, एंड देन मोर देन दैट। सो दिस हैज़ टू बी डन बाय अ वेल ट्रेन्ड गायनोकोलॉजिस्ट who is aware of endometriosis और ट्रीट कर सकती है endometriosis को। इसलिए सबसे बड़ी रिकमेंडेशन तो जनरल पॉपुलेशन फीमेल्स की जो कि इस डिजीज से सफ़र कर रही है वो यही है कि दे शुड गो टू अ प्रॉपर सेंटर एंड स्पेशलिस्ट फॉर असेसमेंट ऑफ देयर endometriosis। एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड इस वक्त किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ वी कैन प्रिवेंट एंडोमेट्रियोसिस, तो मैं अभी आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगी कि हाउ वी कैन प्रिवेंट एंडोमेट्रियोसिस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको थोड़ा सा डिजीज़ बैकग्राउंड अगर पता होगी तो उसकी प्रिवेंशन आप कर सकेंगे। कि एंडोमेट्रियोसिस जैसे शुरू में आप आई टोल्ड यू कि दैट इट इज़ अ डिजीज़ इन विच द endometriotic tissue is lying outside the uterus as well. सो इसमें हार्मोनल इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा है, ईस्ट्रोजन हार्मोन डिपेंडेंट डिजीज़ होता है। सो इस प्रिवेंशन के लिए कोई भी हम ऐसे मयज़ लें जिनसे ईस्ट्रोजन की जो स्टिमुलेशन है वो कम हो जाए तो वी कैन प्रिवेंट द डिजीज़। लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट फॉर दैट पहले किसी वक्त में बहुत पहले पीपल वर गिवन फॉर लॉन्ग टर्म एंटी ईस्ट्रोजन मेडिकेशंस दी जाती थी लोगों को, एंड इसके बीच में लाइक एंटी प्रोजेस्टेरॉन, एंटी ईस्ट्रोजेंस और डायनासोल टाइप की मेडिकेशंस बहुत ज़्यादा रेकमेंड, बट दे आर नाउ strong recommendations that all these medications they should not be given to prevent endometriosis or not even for treatment of endometriosis. तो प्रिवेंशन जो है उसके लिए ज़्यादा अच्छा ये होता है कि आप एज सच तो इसको, क्योंकि हमें इसकी कॉज सही नहीं पता, हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म जिस तरह से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट कैन बी हेल्पफुल इन preventing endometriosis, or the people who have endometriosis, उनमें endometriosis के पेन और symptoms जो कम हो जाएं, क्योंकि endometriosis again is related to estrogen, तो ovulation, repeated ovulations के साथ ovaries जो stimulate होती हैं उसमें भी endometriosis का पेन और उसके disease बढ़ जाता है। So इसकी वजह से it is we can prevent it, and this is one of the way we can prevent the endometriosis, but actually we do not know the cause, therefore एग्जैक्ट कॉज नहीं पता, सो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि ये मेजर्स आप लेंगे तो ये बिल्कुल इफेक्टिव होंगे एंड वी कैन प्रिवेंट एंडोमेट्रियोसिस विद इट। पेन सबसे मेजर सिम्टम होता है एंडोमेट्रियोसिस में। पीपल यूजुअली दे रिपीटेडली गो टू डॉक्टर बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोटिक पेन। एनाल्जेसिया इसलिए प्रोवाइड करना पेशेंट्स को जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें मेजर होता है, और एनाल्जेसिया, एनी गुड एनाल्जेसिया विच वर्क्स फॉर पेशेंट इज गुड इनफ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स simple analgesia is not effective to relieve the pain, and therefore hormonal treatment जो है वो recommended है, और strong recommendations यही है कि to relieve the pain oral contraceptive pills are best for patients of endometriosis. It is oral contraceptive pills जो हैं, it is to reduce the endometriosis associated dyspareunia and dysmenorrhea. It is not to relieve the menstrual pain related to other causes. Therefore, oral contraceptive pills या combined contraceptive pills जो हैं, they are the first line of treatment in cases of endometriosis because it can help in relieving the pain. इसके बाद हम खाली प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स भी दे सकते हैं, which is also part of first line treatment, and if the patient is not relieved with this treatment only, then the second line of treatment is gonadotrophic releasing hormone agonist भी दे सकते हैं, antagonist भी दे सकते हैं, और जो इससे पहले यूजुअली
people were giving other anti-estrogen medications, वो नहीं दी जाती हैं. So therefore the patients are prescribed GnR agonist, but this is the second line of treatment and we have to consider कि पेशेंट की अपनी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसकी फर्टिलिटी से रिलेटेड क्या इश्यूज हैं, फिर ये मेडिकेशन सेकेंड लाइन ऑफ मेडिकेशंस देनी चाहिए. एंड इफ इट इज़ आल्सो नॉट इफेक्टिव देन वी कैन गो फॉर एंडोमेट्रियोसिस पेन के लिए which is refractory to these treatments. Aromatase inhibitors, they can be combined with all this continuously and they can be given alone as well, or surgical treatment be recommended endometriosis में. And again we have to bear in mind that these treatments are recommended to relieve the pain of endometriosis, because as someone has asked that what is the success rate of IVF in endometriosis, so endometriosis or infertility से related issues के बीच में there are different treatment modalities which are required. So a surgical treatment could be one of these, but surgical treatment basically patients को refractory pain के लिए दिया जाता है अगर पेन उनका नहीं रिस्पॉन्ड करा एनाल्जेसिया और हार्मोन ट्रीटमेंट को, और बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस इसमें उनका एंडोमेट्रियोसिस जो है वो स्टेजिंग में 4-5 पर है और उनकी बहुत बड़ी बड़ी सिस्ट बन चुकी हुई है. वी हैव टू डू ट्रीटमेंट सर्जिकली. अब IVF और एंडोमेट्रियोसिस का जो प्रोसेस है इसके बीच में इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट द endometriosis affects 50% women. Infertile women, they can have endometriosis. So we have to be aware of this thing when we are treating patients with who come for infertility treatment, but it is not recommended that any surgical procedure, it has to be performed prior to treatment of IVF treatment, and it is not going to increase any live birth rates if we go for surgery before going to ART or IVF treatment. The success rate of IVF in endometriosis patient is almost same. Very few. If you see the data, there is very little change in live birth rate in patients who have been treated with IVF for endometriosis or otherwise. And IVF treatment does not worsen endometriosis. This is also very important. We have to understand that it will not worsen the endometriosis because there are options of giving medical therapies related to infertility, and we can give prior to medical therapy. There is severe pain, then surgical treatment is required. Otherwise, medical treatment is first line of treatment in cases of endometriosis. Therefore, even if there is endometriomas, ovarian endometrioma, we are not in a position कि हम सबसे पहले जो सर्जरी पेशेंट की करते हैं उसके बाद उसके फर्टिलिटी से रिलेटेड ट्रीटमेंट उसके बाद शुरू करें. तो फर्टिलिटी जो है उसके बीच में इस मेडिकल थेरेपीज जो होती हैं वो जिस तरह से बाकी फर्टिलिटी के पेशेंट्स के लिए हम ट्रीट करते हैं उसी तरह से ट्रीटमेंट जो है इनफर्टाइल वुमेन हैव एंडोमेट्रियोसिस उनमें ट्रीटमेंट में शुरू किया जाता है. इट इज़ नॉट रिकमेंडेड दैट वी शुड गो फॉर ओवेरियन सप्रेशन बिकॉज ये सबका कंसेप्ट होता है कि उसमें एंडोमेट्रियोसिस के बीच में सिस्ट बन जाती हैं एंडोमेट्रियोटिक इन ओवरीज के बीच में, एंड देयरफॉर द ओवरीज नीड टू बी suppressed, and then we can have to go for fertility treatment. Therefore, it is a strong recommendation that infertile women with endometriosis, they should not be prescribed ovarian suppression in treatment to improve infertility. एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि infertility is it treatable in between the endometriosis related infertility treatment? Endometriosis is treatable in between the endometriosis. Endometriosis is treatable, yes, if we are not going for infertility treatment. The thing which is, again, I am repeating myself, that for the main symptom and complaint of the patient is pain, and for the relief of pain, if our first line of therapy with analgesia, hormonal treatment,
which can be letrozole based treatment as well and aromatase inhibitors. If they fail, then we have to go for surgical treatment. And in surgical treatment, it is very important to consider that the surgical treatment can be in the form of for removal of endometriomas in ovaries, and it is important that and whenever we are doing surgery for treatment of endometriosis, it should be excision based. We should not go for aspiration of cysts or endometrioma cysts are not aspirated. It is recommended that they should be excised. With laser carbon dioxide ablation can also be done, but it is recommended that cysts को aspirate नहीं करना, वो दोबारा से endometriomas बन जाएंगे. उनको excise करना है, and then again, as I mentioned earlier, that experts, laparoscopic surgeons should be involved in it because we can damage ovaries very easily when we're doing surgery. That's why surgical treatment is not the first line of treatment. क्योंकि ovaries के reserves हैं, ovarian reserves, they can be very easily depleted if we अच्छी सर्जरी की जाएगी और एंडोमेट्रियोमा के साथ हेल्दी नॉर्मल ओवरी टिश्यू जो है वो एक्सरसाइज कर दिया गया, तो बेहतर होने के बजाय इनफर्टिलिटी जो है वो वर्सन होगी इस पेशेंट की. और सेकेंडली ये है कि इफ देयर एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स हैं तो वहाँ पे जहाँ पर भी एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स आपको मिलते हैं उसमें भी पेशेंट्स के वो जिस जगह पे भी सर्जिकल ट्रीटमेंट आप पेशेंट्स का कर रही हैं, और सर्जिकल ट्रीटमेंट में ये इम्पॉर्टेंट है कि जब सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाए तो देन एक्सीजन के ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करना है, नॉट दैट वी हैव टू डू डीप एंडोमेट्रियोसिस के बीच में आप छोड़ दें ये कह के कि भाई सर्जिकल एक्सीजन जो है वो एब्लेशंस करनी ज़रूरी है, स्पॉट्स को रिमूव करना ज़रूरी है उसके बीच में. एंड द डिसीजन टू ऑफर, जैसे किसी ने भी फिर पूछा हुआ कि एंडोमेट्रियोसिस जो ओवुलेशन पे कैसे इफेक्ट करेगी, व्हाट आर द ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स इन एंडोमेट्रियोसिस. तो जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है उसके बीच में तो ये बहुत क्लियर है कि सर्जिकल एक्सिजन ऑफ डीप एंडोमेट्रियोसिस लीजन्स प्रायर टू IVF treatment should only be guided if there is severe pain, and if the patient is patient preference होनी चाहिए. पहला तो आपको गाइड करना पड़ेगा कि पेन के सिम्टम्स के लिए हमने ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि इसकी इफेक्टिवनेस ऑन द आउटकम ऑफ IVF, इफेक्टिवनेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ फर्टिलिटी इज स्टिल अनसर्टन. रिप्रोडक्टिव आउटकम कैसे निकलेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट के, वी डू नॉट नो. Rather, there is a risk of damaging the healthy ovarian tissue by removal of endometriotic cyst, and they can have decreased intrafollicular count, which can affect their fertility later on. Surgical treatment में तो बहुत इसमें careful होकर हमें surgical treatment करने की ज़रूरत है. But what are the treatment strategies जो कि हम use कर सकते हैं, जो कि हमारे पास infertility के जब patients आते हैं तो what are the treatment options available to them? Then in that case there are all the treatment options जो कि हम रेगुलर अपने पेशेंट्स को अवेलेबल होती हैं, वही ट्रीटमेंट ऑप्शंस हम पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स जो हमारे पास इसमें आएंगे रिलेटेड फॉर ट्रीटमेंट फॉर दी एंडोमेट्रियोसिस, उनमें उसी तरह से हम एसोसिएटेड टू डैट हम उनकी वो करेंगे. ओवुलेशन इंडक्शंस भी कर सकते हैं पेशेंट्स की, और इनकी ओवुलेशन इंडक्शंस के लिए ये नहीं है कि आप ये कहें कि जो ओवुलेशन इंडक्शंस के लिए हम रेगुलर मेडिकेशंस यूज़ करते हैं वो हम नहीं यूज़ कर सकते. वी कैन यूज़ द रेगुलर मेडिकेशंस विच आर यूज्ड फॉर अदरवाइज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फर्टिलिटी. वो सब मेडिकेशंस हम इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स जो एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड हैं उसके बीच में भी यूज़ करेंगे. और ओवोसाइट्स जो हैं उनका ये ज़रूर याद रखिएगा कि इनके एंडोमेट्रियोसिस वाले पेशेंट्स जो होते हैं इनके बीच में वी डू कम अक्रॉस विद दिस कि उनका ओवोसाइट्स जो है रिट्रीवल के वक्त जिस वक्त IVF करते हैं तब भी रिट्रीवल में हमें ओवोसाइट्स उनके कम हो सकता है मिलें, एग रिट्रीवल के टाइम के ऊपर ओवोसाइट्स जो हमें कम मिले. और उसके साथ साथ ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि जो ओवोसाइट्स हमें मिलते हैं वो उनसे ओवरीज में एम्ब्रियोज जो है उनकी ग्रोथ और फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हो जाएं थोड़े से. बट ओवरऑल एंडोमेट्रियोसिस के जो पेशेंट्स हैं उनमें और एंडोमेट्रियोसिस के जो पेशेंट्स जो कि
आपके ट्रीटमेंट के लिए आए हुए होते हैं, उनके बीच में रिजल्ट्स एक जैसे आते हैं, उनके रिजल्ट्स के बीच में कोई वो नहीं होती है, effectiveness कम नहीं हो जाती. But infertile women with stage 1 endometriosis, in which the endometriosis is present only, ये इसी वजह से इसकी स्टेजिंग पहले होनी चाहिए. और जैसे पहले आपको कहा था कि इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट आर इवेल्युएटेड फॉर द ट्रीटमेंट कि उनका किस स्टेज का डिजीज है. तो स्टेज 1 और 2 ये जिसको माइल्ड टू मॉडरेट एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, उनके बीच में ओवेरियन स्टिमुलेशन की जा सकती है विद व्हाटएवर द प्रोटोकॉल दैट सेटअप इज ऑफरिंग, जो कि हम अपने पास भी यहाँ पे करते हैं, विच ओरल मेडिकेशंस दे आर गिवन, एंड दीज ओरल मेडिकेशन के साथ ओवेरियन स्टिमुलेशन की जाती है. और ओवेरियन स्टिमुलेशन जो है इट कैन बी अलॉन्ग विद गोनेडोट्रोपिन्स एज वेल, and IUI can be done if we know that the tubes are patent. जो कि ग्रेड स्टेज 1 और 2 का एंडोमेट्रियोसिस होता है, वो लेबल उसी को करते हैं जिसके बीच में बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोटिक डिजीज द ट्यूब्स आर नॉट इफेक्टेड एंड ट्यूब्स आर पेटेंट. ऐसी कंडीशन के बीच में IUI, if there is no other contraindication, semen analysis and every other parameter is normal, then we can perform ovarian stimulation plus IUI, which is recommended usually as a first line of treatment. But in cases of stage 3 or 4, or in which the endometriosis, in which the tubal patency is uncertain, in that condition, it could be considered if the patient is willing for it. But we have to tell this patient that ovarian stimulation is effective. It increases the live birth rate compared to giving no treatment to the patient. And after the surgery and ovarian intrauterine insemination with ovarian stimulation जो है, that can also be considered if an endometrioma has been removed, or prior to the treatment of infertility endometriosis के लिए patients जो हैं उन्होंने कोई treatment करवाया in the form of the removal of endometriotic cyst, then within 6 months we can start the treatment with ovarian stimulation and IUI. We can go ahead with IUI, and there is no risk that it will increase there. As many people have asked if there is a risk of increasing endometriosis cyst. No, there is no risk of increasing the endometriotic cysts, and we can go ahead with this treatment within 6 months of surgical removal of endometriotic cyst as well. Most of the studies which have been done with endometriotic patients and stimulation for ovulation, gonadotrophins are used. Gonadotrophins are preferred. Clomiphene citrates and letrozoles and estrogen therapies, they are an option, but the evidence it indicates that in the cases of endometriosis, gonadotrophins, they are best suited for the women for in the cases of mild to moderate endometriosis for ovarian stimulation or ovulation induction, and then following that it could be IUI or they can conceive naturally. But in assisted reproductive technology, there are no randomized trials which have still evaluated the efficacy of artificial reproductive technologies, ART, versus no intervention in women with endometriosis. Therefore, we do not know that if a woman is not treated and if she has been given ART, तो कौन के results होंगे. और इसी तरह से अभी तक हमारे पास डाटा जो कि proper randomized controlled trials में नहीं available है, इतना ज़्यादा डाटा available नहीं है जिसमें ये evaluation हो सके कि क्या what is the success rate of endometriosis treated infertility and other causes of infertility. क्योंकि influence of endometriosis का effect जो है ART के ऊपर, it is almost same. Endometriotic patients going for treatment with infertility, they have almost the same outcome with very little difference in all the randomized controlled trials available to us in live birth rates, comparing with the women who are treated for the infertility without endometriosis. The only concern is that the mean number of oocytes which can be retrieved per cycle, they can be lower in women with endometriosis. They can be lower in women with endometriosis. This is, therefore, we can say that there are
chances of having like many embryos developing from the cases of women who have endometriosis is lesser than those women who have been treated for infertility without endometriosis. But in women with stage 3 and 4, that is more advanced endometriosis, they are more at risk of having lower number of oocytes compared to the patients who have mild disease of endometriosis. Therefore, the people who come with endometriosis, we cannot say that your IVF success rate will be less than compared to the women who are coming for other reasons of infertility, and therefore there is still little complete data available on the impact of endometriosis on fertility and its reproductive outcomes. Therefore, we have to say that yes, the outcome would be same as it is with other infertile women, and gonadotropin dosage is given to the women, and the number of the embryos, the high quality of embryos, the clinical pregnancy rate, the implantation rate, and the live birth rate, which has the data shows up till now, it is similar in the patients who have endometriomas and patients who do not have endometriomas. And therefore, the outcome for IVF is almost same in both the cases. The type of ovarian stimulation, I have already told you that type of ovarian stimulation जो है हम प्रोटोकॉल में ज़्यादातर पेशेंट्स में जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ इसमें GnRH एगोनिस्ट यानी कि गोनाडोट्रोफिन्स जो हैं वो हमें देने चाहिए ओवेरियन स्टिमुलेशन के लिए पेशेंट्स में। और ये IVF का जो ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड रूटीन ट्रीटमेंट IVF का किया जाता है, उसके बीच में भी जो भी आप हम यूज करते हैं एगोनिस्ट protocols and antagonist protocols, and there is no difference in ongoing pregnancy rate has been observed up till now on the data which is available for the treatment of endometriosis patients with infertility treatment. And therefore it is recommended by all the guidelines available that ART can be performed with endometriosis, especially if tubal function is compromised, which is in many cases. तो endometriosis के बीच में हम ART हमें करना चाहिए, और specific protocol of ART in women with endometriosis is not recommended कि ये specific सिर्फ endometriosis के patients में होगा treatment और बाकी सब में different treatment होगा. Agonist treatment, antagonist protocols, they can be offered based on all the other criteria of the patients. और पेशेंट्स को ये रीअश्योरेंस भी करवानी बहुत ज़रूरत है कि देयर इज अ सेफ प्रोसीजर, बिकॉज मैनी पीपल इस फर्टिलिटी ट्रीटमेंट जो है वो सेफ है इन पेशेंट्स विद एंडोमेट्रियोसिस. तो ART का ट्रीटमेंट इट इज सेफ इन पेशेंट्स विद एंडोमेट्रियोसिस एंड देयर इज नो रिकरेंस रेट, इंक्रीज इन रिकरेंस रेट. ये नहीं है कि आपने इनफर्टिलिटी IVF करवा लिया, उसमें ओवुलेशन इंडक्शन स्टिमुलेशन हो रही है, या अदरवाइज आपने ART पे नहीं गए हैं, सिंपल ओवुलेशन इंडक्शन है, तो ओवुलेशन इंडक्शन जो स्टिमुलेट कर रही हो इसको, तो रिकरेंस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस इंक्रीज हो जाएगा. इट इज नॉट सच कि एंडोमेट्रियोसिस रिट्रीव हो जाएगा. एंड इन केसेस ऑफ and big endometriomas, yes, they can be removed surgically before the start of treatment. About within 6 months ovulation induction we start kar sakte hain. Even in those women there is no effect on recurrence rate, इनका increase हो जाएगा. और most of the evidence जो हमारे पास available है, it does not demonstrate a negative impact of endometriosis on live birth rate after ART. Therefore reassurance patients को ये देनी बहुत ज़रूरत है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे क्या इनफर्टिलिटी जो है उसमें कितनी IVF की सक्सेस कितनी है, वो पॉसिबल है कि नहीं, परसेंटेज कितनी है. तो परसेंटेज इसकी सक्सेसफुल की उतनी ही है जितनी नॉन एसोसिएटेड एंडोमेट्रियोसिस नॉट एसोसिएटेड ART के ट्रीटमेंट की सक्सेस. यही हमें अपने पेशेंट्स को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अदर बाकी बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं जो कि रेस्ट ऑफ द इनफर्टिलिटी में इफेक्टेड होते हैं, वो इसी तरीके से एंडोमेट्रियोसिस में भी होंगे. And what is the specific protocol? It is अभी भी endometriosis के ऊपर कोई एविडेंस इस वक्त की अवेलेबल नहीं है, और ये भी एविडेंस अवेलेबल नहीं है हमारे पास कि IUI ज़्यादा इफेक्टिव होगा या ART ज़्यादा इफेक्टिव
होगा। तो पेशेंट की प्रोफाइल जो है evaluation for treatment of fertility बिल्कुल वैसे ही होगी जिस तरह से रेस्ट ऑफ द पेशेंट्स के लिए करती हैं, और जो मेडिकल एंडोमेट्रियोसिस का सर्जिकल ट्रीटमेंट दोनों जो है मोस्टली उनका फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट जो है इज बेस्ड टू रिलीव द पेन के रिलीफ के लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट भी एज अ सेकंड ऑप्शन होगी। हार्मोनल ट्रीटमेंट और मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो नहीं उसमें इफेक्टिव हुआ। और एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड इनफर्टिलिटी जो है उसको ट्रीट करने में परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रोटोकॉल होगा या आउटकम्स बुरे होंगे, आउटकम्स इसके उतने ही अच्छे होंगे जितने रेगुलर ट्रीटमेंट के पेशेंट्स होंगे फर्टिलिटी के लिए। एंड देयर फर्दर ट्रीटमेंट जो है हम इसके बीच में डिस्कस करने के लिए कि कितनी डिटेल में एंडोमेट्रियोसिस के क्या क्या है, कौन सी स्टेजेस पे कैसे ट्रीटमेंट होंगे, ये इट इज अनदर टॉपिक और इशू है जिसके ऊपर आपको के लिए अलग सेशन अरेंज करने की जरूरत होगी। एंडोमेट्रियोसिस इज स्टिल अ वेरी वेरी इवॉल्विंग सब्जेक्ट जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और रिसर्च हो रही है, और हमारे पास इतने क्लियर गाइडलाइंस जो अवेलेबल थी वो तो मैंने आपसे डिस्कस कर ली कि दिस इज नाउ द स्टैंडर्ड गाइडलाइंस कि हमें किस तरह से मेडिकली ट्रीटमेंट करना है, सर्जिकली ट्रीटमेंट करना है, और ये कैसे पेशेंट्स को कैसे उसमें ऑफर कर सकते हैं। और रिकरेंस रेट आपका किसी भी ट्रीटमेंट से इंक्रीज नहीं होता पेशेंट्स का, ये पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेशेंट्स ये पूछते हैं कि हमने ये करवा लिया तो हमारा कोई हो जाएगा, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होगा। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड देन देयर इज अनदर थिंग जो मैं बिल्कुल थोड़ी सी आपसे बात करूंगी वो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के ऊपर है कि समटाइम पेशेंट्स विद severe endometriosis, particularly those which have bilateral endometriomas, they अभी जो हमारे पास रहता है we have seen that they are at high risk of premature ovarian insufficiency, they can have lower AMH levels। ऐसे पेशेंट्स के बीच में उनकी प्रिजर्व करने के लिए समटाइम्स एंडोमेट्रियोमास का जो रिमूवल होता है इट impacts their ovarian reserves rather than improving their fertility, ovarian reserves को impact कर लेता है। इसलिए ये पेशेंट के साथ फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के बीच में स्पेसिफिकली एग प्रिजर्वेशन के हम एग फीमेल्स के प्रिजर्व कर लें, उसमें भी बेनिफिट कम मिल रहे हैं। और ओवरऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है डाटा प्रिजर्वेशन ऑफ ओवेरियन ओवरसाइट्स की जो रिजर्वेशन है उसको रिजर्व कर लिया और बाद में यूज किया, उसका सक्सेस रेट बहुत कम है। एंड स्पेसिफिकली इफ दे आर नॉट यूज्ड विद इन अबाउट 1 to 1.5 years ऑफ प्रिजर्वेशन, उनका आउटकम बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता एंड फर्टिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल विद बोथ सेव्ड ओवरसाइट्स। देयरफॉर preservation of fertility, its true benefit in endometriosis is still unknown, and we have to discuss it with the women who want to have their cryopreservation of ovocytes for before the treatment of endometriosis. And I hope कि ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के या ऑलमोस्ट सारे मैंने कोशिश तो की है कि मैं जवाब दे दूँ। एंड बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि ये एंडोमेट्रियोसिस जो है इस तरह का टॉपिक है जिस पर बहुत लंबी डिस्कशन भी हो सकती है एंड इट इज स्टिल इवॉल्विंग इन सर्टन रिगार्ड्स। देयरफॉर आई थिंक कि आज की डिस्कशन तो मैं इसी पे बंद करूंगी। अगर आपको कोई फर्दर भी क्वेश्चंस होंगे तो वी कैन अरेंज अनदर सेशन। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।